Okay, good morning, students. Today we are going to discuss with the topic that is the escape velocity. Velocity, nothing but whatever the distance we carried out in a particular time, that distance upon time in a particular direction, it is called as a velocity. So escape velocity means we have to escape from this earth, clear, with a particular value of the velocity. It is known as the escape velocity. The escape अगर करना है, so for to understand the escape velocity, just we have to perform one activity. We have to play with the stone. We have to take a stone in our hand and throw that stone into the sky. जितनी हम फोर्स लगाएंगे, जितनी हम इनिशियल वेलोसिटी उसे प्रोवाइड करेंगे, क्लियर है, as it goes in upward direction due to the continuous downward pull by the earth gravity, it will attain some height, clear है, it will remain at that point for a fraction of a second, and again due to the continuous downward pull it again back towards the earth surface, क्लियर है. हम और भी उससे ज्यादा फोर्स देते, और भी उसकी इनिशियल वेलोसिटी उसकी इंक्रीज करते, सो अगेन इट विल catches some particular height. That means if we increase the initial velocity of an object, so it can attain a maximum height on the surface of the earth. Then also this gravitational force is continuously acting on such an object, and due to that force the object attains some height and again return back to the earth surface. क्लियर है. लेकिन अगर हम इनिशियल वेलोसिटी इतनी ज्यादा देंगे so that the object can attain a maximum height from the surface of the earth, at that height the gravitational force will not be exerting on such an object. That height, that velocity is known as the escape velocity. Means अगर हमें फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीज करनी है, क्लियर है, फाइनल वेलोसिटी दैट इज नथिंग बट v, अगर हमें मैक्सिमम वेलोसिटी उसकी फाइनल वेलोसिटी अगर हमें अटेन करनी है, मैक्सिमम हाइट अटेन करनी है, सो इट विल डिपेंड अपॉन योर इनिशियल वेलोसिटी. मतलब इनिशियल आप उसको कितना बूस्ट करते हो, कितनी वेलोसिटी उसको प्रोवाइड करते हो, क्लियर है, अकॉर्डिंग टू दैट द फाइनल वेलोसिटी विल बी डिसाइडेड. इनिशियली आप जितना उसे ज्यादा इनिशियल उसे वेलोसिटी दोगे, स्पीड दोगे, क्लियर है, बूस्ट करोगे, so according to that it can attain a maximum height from the earth's surface, so that the gravitational force, this, and we already known that as we are increasing the height from the earth's surface, clear है, the value of the g goes on decreasing. तो हम इतनी हाइट उसकी इंक्रीज करेंगे, इतनी हाइट उसकी इंक्रीज करेंगे, so that it can attain the maximum height and the gravitational pull cannot be exerted on such an object, so that that object escape from the earth gravitational pull, and it cannot be again returned back to the earth surface. It cannot fall down on the earth surface, otherwise or instead of that it will stay in the space at the rest position. Clear है? This is known as the escape velocity. तो हमने क्या समझा है? Escape velocity, it is only the escape velocity nothing but the final velocity. Clear है? हम यहाँ पे लिखेंगे E escape. Clear? So escape velocity is depend on the initial velocity of the object. Clear है? अगर हमें उसका distance करना है, मतलब डिस्टेंस कितना वो ज्यादा कैरी कर सकता है, कितनी हाइट पर वो जा सकता है, अगर हमें ये रिलेशन फाइंड आउट करना है, सो फॉर दैट रिलेशन between the initial velocity and final velocity, it is given by the Newton's third equation of motion, that is v square is equal to u square plus twice as. क्लियर है? v square क्या हुई हमारी यहाँ पे? v is nothing but the final velocity, u is nothing but the initial velocity, clear है, a is nothing but the acceleration, तो a की जगह पे हम यहाँ पे क्या लेंगे? g. Which acceleration is acting on such an object? That is acceleration due to the gravity. But not only the g, instead of that we are taking here minus g, because
यहाँ पे हम माइनस लेंगे g की वैल्यू. क्यों माइनस लेंगे? Because when the object is traveling in a opposite direction and gravitational force is acting in a downside, clear है? Gravitational force downside की तरफ act हो रहा है, due to that the force which is acting downside, we can say that, clear है? And due to that the object is try to pull towards the downside, मतलब force इस तरफ act हो रहा है और आपका जो object है opposite direction में उसकी velocity है. So that's why here we have to take the minus g value, ठीक है? क्योंकि force gravitational force downward में act हो रहा है and आपकी जो direction है velocity की वो upward side में, ठीक है? That's why we have to take a minus g. Okay? So हम यहाँ पे लिख सकते हैं v escape. ठीक है? Final velocity is nothing but our our final velocity is nothing but our escape velocity. So v escape, v square is equal to u square plus twice as की जगह पर अब हम लिखेंगे u square minus 2gs. a की जगह पर अगर हम माइनस वैल्यू पुट करेंगे माइनस g, ये इक्वेशन हो जाएगा v square minus twice gs. लेकिन v escape means what? v escape means what? Maximum velocity. ठीक है? मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी? इतनी वेलोसिटी होगी कि वो अर्थ सरफेस को एस्केप कर जाएगा एंड इट विल बी रेस्ट इन द स्पेस. सो एट दैट टाइम v विल बी टेंड्स टू 0. फाइनल वेलोसिटी उसकी 0 हो जाएगी. सो हियर वी कैन राइट 0. ठीक है? सो 0 u स्क्वायर. अब हमें फाइंड आउट क्या करना है? s की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. What is the maximum height? What is the maximum distance which is covered by that object? तो अगर s की वैल्यू फाइंड आउट करनी, u स्क्वायर इस साइड में पॉजिटिव है, इस साइड में आएगा तो माइनस u स्क्वायर, क्लियर है, इज इक्वल टू ये माइनस ट्वाइस g है, इस साइड में आएंगे तो प्लस ट्वाइस, यहाँ पे मल्टीप्लाई है इसलिए इस साइड में आएगा तो डिवाइड हो जाएगा. ठीक है? सो माइनस यू स्क्वायर अपॉन ट्वाइस जी will be the distance of that object from the earth surface. मतलब हमारा जो डिस्टेंस है मैक्सिमम हाइट, डिस्टेंस नथिंग बट द हाइट. तो हाइट हमारी किस पर डिपेंड है? इनिशियल वेलोसिटी पर. मतलब आपके ऑब्जेक्ट की जितनी ज्यादा इनिशियल वेलोसिटी होगी उतनी ज्यादा वो डिस्टेंस कवर करेगा. The reason behind that is इनिशियल वेलोसिटी उसकी जितनी ज्यादा होगी उतना वो अर्थ ग्रेविटी फोर्स को अपोज करेगा, बिकॉज इट इज ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन एंड एक्सेलरेशन इट इज एक्टिंग इन अ डाउनवर्ड साइड. तो जितनी आपकी ज्यादा इनिशियल वेलोसिटी होगी दैट मींस द ऑब्जेक्ट विल अपोज द ग्रेविटेशनल पुल्स मोर, and by opposing this gravitational pull it can reaches up to the maximum height. इतनी ज्यादा हाइट पर वो, जितनी ज्यादा आप इनिशियल वेलोसिटी दोगे उतनी ज्यादा हाइट पर उतना ज्यादा वो डिस्टेंस कवर करेगा. क्लियर है? उतना ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा मतलब क्या? द हाइट ज्यादा इंक्रीज होगी तो डिस्टेंस विल goes on increasing and value of the g will goes on decreasing acting on such a object. तो इतनी ज्यादा हाइट ऊपर जाएगा वो कि अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स will tends to 0 and that object will overcome from this earth gravitational force, we can say that, and never back to the earth surface forever. ठीक है? So this is known as the escape velocity. So escape velocity जो है that is nothing but your final velocity which is totally depend upon your initial velocity. ठीक है? अपने मंगलयान भी देखा होगा और whatever that in that picture also, जैसे ही हम अर्थ ऑर्बिट के पास वो सैटेलाइट वो जो रॉकेट है वो ऑर्बिट करने लगता है, but due to the earth gravitational force it cannot be escaped from the earth's orbit. तो हम एट पर्टिकुलर हाइट पर आने के बाद उसे फिर से बूस्ट करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी फिर से उसकी इंक्रीज करते हैं एंड जो इंजन है वो स्विच ऑफ करते हैं, अगेन इट कवरिंग मैक्सिमम डिस्टेंस. उसी पॉइंट पर आने के बाद फिर से उसे बूस्ट करते हैं, अगेन इट विल कवर अ मैक्सिमम डिस्टेंस. In such a way, by increasing the initial velocity of an object, you can attain the maximum distance, you can attain a maximum height so that you can overcome from this continuous downward pull of the earth gravitation. So this velocity is known as the escape velocity. तो आपका distance किस पर depend है? Your initial velocity, that is minus u square upon twice g. ठीक है? Okay, just
नको करू बे, थांब दोन मिनिट. एकच मिनिट थांब, मी पॉज केले. नको ते बिघडेल बरं का आधीच तर. ओके, तो अब हमने देखा है कि what is the meaning of the escape velocity that we have studied. So let me calculate the value of the escape velocity. ठीक है, by using some equations. ठीक है, so let me consider the object of a mass. जैसे स्टोन हमने कंसीडर किया, that is mass m. ठीक है, which is at a, जैसे हम वो थ्रो करेंगे. Okay, so whatever the initial velocity of that object, it is nothing but equal to the escape velocity. क्लियर है ना, तो मतलब जितनी ज्यादा हम इनिशियल वेलोसिटी देंगे, किसलिए, ऑब्जेक्ट को अर्थ ग्रेविटेशनल पुल से एस्केप होने के लिए. दैट्स व्हाई आवर इनिशियल वेलोसिटी इज नथिंग बट इक्वल टू द एस्केप वेलोसिटी. सो व्हाट इज द एनर्जी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, एंड सेकंड हम चेक करेंगे व्हाट इज द एनर्जी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट एट अ इनफाइनाइट डिस्टेंस. ठीक है, so these are the two conditions. We have to check the energy of that object on the earth surface, and जब हम escape velocity or whatever the initial velocity देने के बाद, okay, whatever the distance it will be carried out, whatever the height it will be reached at that particular height, what is the energy, मतलब infinite distance पर, क्योंकि we know that this force F is inversely proportional to the r square. This force is inversely proportional to the r square. That means ये force कब जीरो होगा, जब हम infinite distance तक reach हो जाएंगे. Suppose if we put the value of r, that is a 1 upon infinity. अगर हमने infinite distance cover कर लिया by increasing the initial velocity at every time, ठीक है, infinite distance 1 upon infinity क्या हो जाएगा, zero. Means that force is tends to zero when the object will reach at infinite distance. ठीक है, तो इसीलिए हमें ऑब्जेक्ट की जो एनर्जी है वो सरफेस पर चेक करनी है ऑन द अर्थ just start the traveling. ठीक है, and at a infinite distance, जब ये infinite distance cover कर लेगा, what is the energy at that particular time, and by using these two equations we can easily calculate the value of escape velocity for that object. ठीक है, so energy अगर हमें काउंट करनी, energy is nothing but the sum of kinetic energy and the potential energy. मतलब ऑब्जेक्ट की जो मोशन में है तब ऑब्जेक्ट की एनर्जी क्या है, एंड आफ्टर पर्टिकुलर हाइट व्हाट इज दैट एनर्जी, दैट कॉम्बिनेशन इज नथिंग बट द टोटल एनर्जी. So total energy is the addition of the kinetic energy and the potential energy. So let me find out what is the kinetic energy of that object of mass m on the surface of the earth. ठीक है, तो हम on the surface of the earth, so initial velocity is nothing but your final velocity. Initial velocity is nothing but your escape velocity. ठीक है, that's why we are writing kinetic energy का हमें इक्वेशन पता है half mv square. Half mv square, but which velocity, escape velocity, जो हमें फाइंड आउट करनी है. ठीक है, so half mv square escape. And potential energy, so we know that the object is on the surface of the earth at a particular height which is less than, at a very less height from the surface of the earth. So in such a case we consider the potential energy, just we have studied, that is the minus gm m upon r. यहाँ पे प्लस h नहीं ले रही, because the object it is on the surface of the earth. That's why we are considering minus gmm upon r. मतलब just कुछ हाइट पर ऑब्जेक्ट हमारा रीच हुआ है which is very very less than the radius of the earth near the earth surface. That's why we consider the minus gmm upon r. So what is the total energy here? Addition of kinetic energy plus potential energy by using this equation. So kinetic energy क्या हमारी half mv square escape plus potential energy, ये माइनस इसलिए मैं यहाँ पे माइनस लिख रही हूँ, माइनस gmm upon r. This is our total energy that is called as E1 on the surface of the earth. So when the object will reach at an infinite distance, what is the energy? Again total energy वहाँ पे हम काउंट करेंगे, that is addition of kinetic energy plus potential energy. तो जब हमारा ऑब्जेक्ट at a particular height पर infinite distance तक travel कर जाएगा, so what is the
and infinite distance travel करने के बाद it will be raised in a space because it will be overcome from this earth gravitational pull and it will rest in a space. That's why kinetic energy half mv square v क्या हो जाएगा, रेस्ट होने के बाद जीरो हो जाएगा. That's why kinetic energy half mv square it tends to zero. Again potential energy का हमारा फॉर्मूला क्या है, माइनस जी एम एम अपॉन आर. ठीक है, हाइट उसकी इंक्रीज हो गई है, so value of the g will goes on decreasing, or we can say that minus gm, अगर ये भी हम वैल्यू लें अपॉन डिस्टेंस कितना कवर किया उसने, r कितना कवर किया, इनफाइनाइट डिस्टेंस हो चुका है, so infinity, so 1 upon infinity nothing but the zero. That's why potential energy is also zero. Total energy that is represented by E2 at a infinite distance is equal to kinetic energy plus potential energy, that is nothing but a zero. So we can find out this escape value according to the law of conservation of the energy. That is, energy can neither be created nor be destroyed, but it will be converted, and the total energy will remain constant. So इस इक्वेशन को यूज करके हम E1 is equal to E2 हो जाता है. What is the value of E1? That is half m v square escape minus g m m upon r is equal to E2 की value, that is nothing but 0. ठीक है, 0. तो ये हम शिफ्ट कर देते हैं, that is half mv square half mv square is equal to, ये माइनस है, इस साइड में जाने के बाद प्लस हो जाएगा, प्लस जी एम एम अपॉन आर. Here we have to find out the value of escape velocity. That's why we can shift this all value to the another side. ठीक है, मास भी हम इस साइड में शिफ्ट करेंगे. That's why it is हो जाएगा v square escape is equal to, यहाँ पे हाफ है, ये 2 यहाँ पे डिवाइड है, इस साइड में आने के बाद वो मल्टीप्लाई हो जाएगा ट्वाइस. ठीक है, एम एम यहाँ पे हम कैंसिल कर सकते हैं, ये एम एंड ये एम. ठीक है, व्हाट इज द रिमेनिंग 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, तो 2 जी एम अपॉन आर. ठीक है, दिस स्क्वायर में फाइंड आउट करना है, वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है. ये स्क्वायर कैंसिल करने के लिए मल्टीप्लाई बाय हाफ, दैट इज नथिंग बट टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड. सो स्क्वायर रूट लेने की वजह से ये हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ट्वाइस gm अपॉन r. So you can use this value to find out the escape velocity, or अगर आप कैपिटल G की वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे, सपोज ये भी इक्वेशन आप यूज कर सकते हो टू फाइंड आउट द एस्केप वेलोसिटी, दैट इज ट्वाइस gm अपॉन r. और अगर आप g की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हो, g की वैल्यू, so you can use this value to find out the escape velocity, that is the under root of twice gm upon r. Or if instead of gm you can put the value of g also, small g, क्योंकि we know that small g, that is acceleration due to the gravity, is nothing but equal to gm upon r square. r square that is हम यहाँ पे कर सकते हैं r multiply by r. ठीक है, r मल्टीप्लाई बाय r. हमारे यहाँ कौन सा इक्वेशन है, gm अपॉन r. मतलब ये अगर gm अपॉन r की जगह पर हम ये g कर सकते हैं, तो ये g यहाँ पे डिवाइड है, इस साइड में आने के बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो gr बराबर है. तो gm अपॉन r की जगह पर हम gr पुट कर सकते हैं. दैट्स व्हाई v एस्केप का न्यू इक्वेशन हो जाता है, दैट इज अंडर रूट ऑफ 2 as it is gm upon r की वैल्यू हम पुट करेंगे gr. So you can use any equation to find out the
escape velocity, that is a capital under root of twice capital GMR, or V escape is equal to under root of twice small gr. Okay, you can use any two equations to find out the V escape. So this is the end of the chapter, that is the gravitation. So in this chapter we have what we have studied. Just recall all the points. First of all, we have studied about the gravitation, how this theory discovered by the that is Sir Isaac Newton, how it were discovered, that we have studied. Next one, we have studied about the centripetal force, that is the center seeking force, which is acted from the center on the object which is revolved in a circular orbit, and due to the acting of this force only, the object is revolved in a particular orbit. This force is known as the centripetal, means center seeking force. Later one, we have discussed about the 3 Kepler's law, which gives the planetary position. ठीक है, first law हमने देखा है, whatever the planet which is revolved in an elliptical orbit actually, and sun is at one of the foci. Second law हमने देखा है, that is the line joining the planet and the sun sweeps equal area in equal interval of the time. And third one, that is square of the period of the revolution of every planet is directly proportional to the cube of the main distance of that planet from the sun. This is the 3 Kepler's law that we have studied. Later one, we have studied about the gravitation, law of gravitation, that we have studied. Here, just I'm checking. Yes, that is a Newton's universal law of gravitation. So this force is act between any two objects on the universe, and every object exert a same kind of the force. So this force is directly proportional to the mass of the object, that is a product of the masses of the two objects, and inversely proportional to the square of the distance between these two objects, that we have studied. Next one, inverse square law जो हमने स्टडी किया है, जिसमें force is inversely proportional to the square of the distance between the two objects, between the planet and the sun, we can say that. So these, to prove this law, we take the help of, that is the Newton's law, 3 Kepler's law that we have studied. उनके help से हमने ये inverse square law find out किया. After that, we have studied about the earth gravitation force, ये कैसे act होता है, how it will be act, that we have studied. Next one, that is the earth gravitational acceleration. Acceleration means change in a velocity. Change in a velocity due to the earth gravitation. That force is known as the acceleration due to the gravity, that is the g. And to calculate the value of the g, because to find out the value of the g, small g, we calculate the two equation. That is the first, F is equal to mg, and second one, that is universal law that we have used, and by putting the value we find out the small value of the g. Then the factors which are affecting on the value of the g, small g, that is the first factor हमने देखा है, on the surface of the earth. Second, that is the, as the height will goes on increasing, the value of the g goes on decreasing. And third one, according to the depth. तो depth में mass भी vary होता है, आपका decrease होता है, radius is also, distance is also goes on decreasing. So two decrease factors also decreases the value of the g. ठीक है? And north pole पर आपका distance जो है from the center वो less than the equatorial. That's why on the north and on the south pole the value of the g will be maximum, and on the equatorial distance ज्यादा है center से equatorial point का, इसलिए वो force जो है, gravity का force जो है वो less act होता है, and the maximum value will be find out on the north and the south pole, and less value will be find out on the equatorial. These are the factors. Later one, we have studied about the mass and the weight. Mass is nothing but the whatever the matter which is present in the object. It is nothing but the mass. And weight means what? Whatever the gravitational force which is acting on such a mass, it is nothing but the weight. हमने difference भी किया है. Mass is the scalar quantity, weight is the weight is the vector quantity. That's why it is depend not only on the magnitude but also on the direction. तो जैसे जैसे direction हमारा change होगा, place change होगी, according to that the value of the g, the value of the weight, due to the variation in the value of the g, weight is also being varied.
ठीक है। तो जैसे हमने स्टडी किया है मून पर हमारा जो वेट है तो 1/6 वो वेट लेस हो जाएगा देन द अर्थ, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव स्टडीड अबाउट द free fall equation हमने स्टडी किया है। free fall means what? The falling of the object under the influence of only gravity. No other forces will act on such an object. This force is known as or this object is known as a free fall object. तो हमने free fall की equation भी देखे, ठीक है। free fall में क्या होता है, आपकी जो velocity है that is nothing but your initial velocity टेंड्स टू 0 हो जाती है, एक ही जगह पर आपको g यूज करना है। बाय यूजिंग दैट इक्वेशन यू कैन इजीली फाइंड आउट द फ्री फॉल। बट फ्री फॉल हम सिर्फ वैक्यूम में ही इन अब्सेंस ऑफ एयर में ही मतलब फील कर सकते हैं, क्लियर है। और ये एक्सपेरिमेंट पॉसिबल है बिकॉज इन प्रेजेंस ऑफ द एयर नंबर ऑफ द फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन सच अ ऑब्जेक्ट which is fall from particular height, just like a frictional force हमने देखा है air, due to the air frictional force. Second one Beyond's force, buoyancy, it will act on such an object. So अगर हमें free fall experience करना है so it will be possible only in a vacuum, that is in absence of the air. Next हमने देखा that is the gravitational potential energy. हमने 4 places पर वो potential energy कैसे vary होती है according to the height that we have studied. Next escape velocity. Escape velocity is nothing but your initial velocity. जितनी ज्यादा आपकी इनिशियल वेलोसिटी होगी उतना ज्यादा आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैरी करेगा, उतना ज्यादा हाइट पर जाएगा एंड अकॉर्डिंग टू दैट इट विल एस्केप फ्रॉम द अर्थ ग्रेविटेशनल पुल फॉरएवर एंड इट विल नॉट रिटर्न अगेन टू द अर्थ सरफेस। तो हमने उसके इक्वेशंस भी फाइंड आउट किए and by using these on the earth and at infinite distance you can easily find out the value of the escape velocity. So this is the end of the chapter. Okay, thank you.